हेलो गाइस, वेलकम टू शाज़ा एकेडमी। माई सेल्फ ज़ेरी। आज हम नहीं पढ़ेंगे। ओके फाइन यार, आज कुकिंग कर लेते हैं। आज हम बनाएंगे करेला यानी कि बिटर गॉड। गाइस, दिस वेजिटेबल is low in sodium and very low in cholesterol. It is also a good source of vitamin A, vitamin B6, vitamin C, folate, magnesium, potassium, zinc and manganese. और हाँ, इसके फायदे तो पूछिए ही मत। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, इम्यून सिस्टम, कैंसर एंड इन्फेक्शन, इस सब में ये बहुत हेल्पफुल है। किडनी के लिए तो बेस्ट। इसमें 8 तरह की एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज भी पाई जाती है। गाइस, ये टेस्ट में बिटर होता है यानी कि कड़वा, जिसकी वजह से मैक्सिमम लोग इसके नाम से ही दूर भागते हैं। सो गाइस, आज मैं बताने जा रही हूँ करेले की ऐसी रेसिपी जिसको ट्राई करने के बाद अगर आप करेला नहीं खाते हैं तो खाने लग जाएंगे। ये रेसिपी है इजी टू कुक विथ मिनिमम इंग्रेडिएंट्स और टेस्ट तो पूछो मत। बिटर, कड़वा, सड़वा आपको पता ही नहीं चलेगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। और हाँ गाइस, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन से हिट कर दीजिए ताकि मेरी अपडेट्स वीडियो आपको मिलती रहे। और हाँ, लाइक कर देना यार, वीडियो आपकी बहुत काम आने वाली है। गाइस, इस चैनल पे आपको पढ़ाई शढ़ाई कुकिंग शुकिंग सब कुछ मिलेगा। तो गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है 4 बड़े करेले, जिसको मैंने काट के सिल पे कूच लिया है, बारीक कर लिया है, जिसकी वजह से ये बहुत ही जूसी और बहुत ही आसानी से पक जाएगा। आप चाहे तो इसको काट भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने काट के इसको कूच लिया है, जिसकी वजह से ये सॉफ्ट हो गया है। ये बहुत ही आसानी से फटाफट जल्दी से जो है गल जाएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है 1 बड़ा टमाटर, जिसको मैंने बारीक काट लिया है। फिर मैंने यहाँ पे लिया है 4 छोटे साइज़ के प्याज, जिसको भी मैंने बारीक काट लिया है। और यहाँ पे मैंने 2 खड़े हरे मिर्चों को बीच से जो है फाड़ लिया है। आप इसको ब्लेंड भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं काट के डाल रही हूँ। जो मिर्चें हैं वो ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें चाहे तो ना डालें। इसके बाद मैं इस रेसिपी को बनाने के लिए यूज़ करूँगी 1 कटोरी मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल। यहाँ पे मैंने टेस्ट के हिसाब से जो है नमक ले लिया है और 1 टेबलस्पून ऑफ रेड चिली पाउडर लिया है। उसके बाद मैं इस रेसिपी को बनाने के लिए यूज़ करूँगी 1/2 ग्लास ऑफ वाटर। सो गाइस, चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं।